18th Pakistan player in Test cricket, playing all four of them. But as far as the wicket itself is concerned, I think we'll have to wait and see. Three slips then for Wasim Akram, who's going to start proceedings. Salim Malik first, Shoaib second, Ramit third, Salim Yusuf behind the stumps. Wasim Akram going to bowl his first over back in the Pakistan side, and he is going to bowl to Gordon Greenwich. Appeal for LBW. God, must have been very close. Yes, I think probably we'll watch it in the replay. The ball probably hitting him high, as we'll watch here. Gordon not offering his stroke, and don't forget, Wasim is bowling over the wicket and the left-hander. Yes, it did bounce and it did hit him high. Over. Appeal for LBW, and he's out. And I think there's no doubt about it. Waqar Yunus strike. And Greenwich is LBW, Waqar Yunus for 3, and the West Indies have lost their first wicket. It's interesting to see in the replay. I think Gordon was not really as forward as I'm sure he would have liked to. And the ball well pitched up, probably within the stumps. There it is, coming up. Waqar bowling close from the stump, pitching the ball up, the ball pitching about middle stump. Yes, all wickets covered, and I think there's no doubt about it. I'm sure when Gordon goes back and has a look at it in the replay, he would realize that. And that's what Waqar has been doing throughout his, what we can call a very short career. He's just started his career, and I think he's got lots of wickets either leg before or bowled. That shows how much straighter he bowls and how much within the stumps he bowls. It's very good. And what is interesting is to see Mushtaq bowling, or Mushtaq being in the team along with him. Yes, because I think it's very rare that we have seen in a test match that two spinners of the same kind participating. Waqar again to Richardson. They go through for a single. Leg byes. That one was off the pad. Umpire Khizr signals the extra. Total now goes to 9. That's Mushtaq also fielding on the onside. In fact, next to Abdul Qadir, if there is next, because Abdul Qadir is at wide mid-wicket, Mushtaq at square leg. They played together at Multan on the last one day, and yeah. That was very interesting to see them bowling together there. I recall that. I think it was in England. I think, or England team touring Pakistan way back in, I think, 60s. They had David Allen and John Mortimer. They played in a test match together. Waqar again. I think Abdul Qadir and Mushtaq played together at Chargers. Yes. एक अच्छा टॉस ये रमीज है स्क्रीन पर, एक अच्छा टॉस रेंज में जीता और इससे थोड़ी बहुत पाकिस्तान की अपनी स्ट्रेटजी में 3 स्लिप, वसीम अकरम, शोएब और मलिक. का एक अच्छा शॉट ओवर पिच बॉल थी ऑफ स्टंप पर. पॉइंट गली के दरमियान से होता हुआ गेंद बाउंड्री लाइन पार कर गया और इस 4 रन के साथ स्कोर वेस्ट इंडीज का 19 एक खिलाड़ी के नुकसान पर जाता है. इसके अलावा मुझे और कोई ख़ास चीज़ इस विकेट में नज़र नहीं आती है कि जो फास्ट बॉलर्स को हेल्प कर सके. दिलचस्पी मेरे ख्याल से स्पिनर्स के आने तक काफ़ी दिलचस्प रहेगा. स्पिनर्स को देखें कैसी गेंद करते हैं इस पिच पे. बाउंस करने की कोशिश, गेंद में ज़्यादा ऊंचा नहीं उठा. रिचर्डसन ने उसको जाने दिया विकेट कीपर के साथ की तरफ. रिचर्डसन हिट विकेट होते होते बच गए. आप देखिए, टोपी विकेट पे गिर जाती तो आउट हो जाते हैं.
शॉर्ट पिच बॉल था, इतना ज़्यादा ऊंचा नहीं था. ये देखें इनकी कैप, उन्होंने बल्कि अपने हाथ से उसको रोक लिया. अगर हम डिफरेंट एंगल से देखें, अगर साइड एंगल से देखें, वॉक करने की कोशिश, लेकिन फुल टॉस 4 रन के लिए रिचर्डसन ने खेल दिया. ये देखिए एक और जाविये से बाउंसर जो ज़्यादा नहीं उठा और गेंद छोड़ने की कोशिश में उनकी कैप विकेटों पर गिरते गिरते और आखिरी मोमेंट में उन्होंने बड़ी अक्लमंदी से वो तो सीख चुके हैं काउंटी क्रिकेट से. हाँ, ये बात आपकी कुछ लगती है दिल को, लेकिन वसीम अकरम के सिलसिले में बात होने पर ये पता लगा कि वो वहाँ पर भी अपने मैचेस चूज करते हैं. ज़्यादातर सिर्फ वनडे मैचेस खेलते हैं और 3 डे मैचेस नहीं खेलते हैं. अपने आप को प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं. वकार यूनुस हेनिंग्स को गेंद थोड़ा सा बाहर निकला, बाहरी किनारा लेती हुई 4 रन के लिए थर्ड मैन की तरफ. 4 रन के साथ स्कोर हो गया वेस्ट इंडीज का 31. गेंद को पैक किया हेनिंग्स ने. स्लाइड देने की कोशिश और कवर की तरफ खेल दिया हेनिंग्स ने 4 रन के लिए. एक अच्छा शॉट. रमीज ने बॉल पकड़कर वापस बॉलर की तरफ फेंक दिया. 4 रन के साथ 45 हो गया वेस्ट इंडीज का स्कोर एक खिलाड़ी के नुकसान पर, और हेनिंग्स का स्कोर हो गया 26 और 11 विकेट. ऑफ तरफ से बाहर किए जिसे छोड़ दिया हेनिंग्स ने. रिसेप्शन अब पेश करेंगे कादर को. कट शॉट खेलते हुए 4 रन बनाए. रिसेप्शन में गेंद ऑफर से थोड़ा बाहर था, इसके साथ स्कोर हो गया 51. पहले घंटे में 51, हेनिंग्स के 27 और रिचर्डसन के 15. 35 हेनिंग्स और 25 रिचर्डसन. राइट, फजल फॉरवर्ड शॉट लगते हुए रमीज फिल्मिडॉफ और स्लिप में सलीम मलिक और विकेट के पास सलीम यूसुफ और आउट. खूबसूरत स्टंपिंग और एक ही विकेट चाहिए थी सलीम यूसुफ को टेस्ट क्रिकेट में अपने 100 विकेट्स पूरे करने की. तो सलीम यूसुफ के 100 विकेट्स पूरे हुए. हमारी तरफ से उनको मुबारकबाद. सिकंदर, ये हमारी तरफ से भी बहुत ही अच्छी स्टंपिंग थी, बहुत तेज. हालांकि जो विकेट कीपिंग होती है स्पिनर से ही बहुत मुश्किल होती है, तो बहुत अच्छी. और 100 इस तरह सलीम यूसुफ के. और ये रिप्ले मुनीर साहब, यहाँ कोई वजह नजर नहीं आती है हेनिंग्स की इस किस्म का शॉट खेलने की. टेस्ट मैच में 5 दिन पड़े हुए हैं और कोई मेरे ख्याल से बहुत ही गैर जिम्मेदाराना शॉट है इनका आगे निकल कर खेलना इस वक्त मुश्ताक को. रिचर्डसन की तो बहरहाल दोनों की पार्टनरशिप जो है वो काफी मजबूत हो गई थी. रिची आए भी उस वक्त से जबकि सूरत हाल वेस्ट इंडीज के लिए काफी खराब थी. जी, अच्छी बैटिंग कर रहे थे, मगर ये कि देखें फिर से बड़ी तेजी और खूबसूरत बहुत मैंने कोशिश की थी ऋषि रिचर्डसन ने अपने पाँव वापस लाने की पीछे, मगर ये काफी आगे निकल गए थे. तो नए बैट्समैन हैं बेस्ट वेस्ट इंडीज. 2 खिलाड़ी आउट और स्कोर है उनका 77. बेस्ट बैट्समैन
आउट चेक अंपायर रियाज ने आउट दिया बेस्ट को रमीज और एक्शन रिप्ले में देखेंगे मगर बेस्ट कुछ मुतमईन नजर नहीं आ रहा मुतमईन नजर नहीं आ रहे, हमें देखना पड़ेगा। ऐसा लग रहा था गेंद पहले उनके पांव से लग गया। अब देखते हैं एक्शन रिप्ले में। एक्शन रिप्ले अगर हम सामने से देखेंगे तो फिर हमें ज्यादा बेहतर पता चलेगा। सामने से नहीं साहब, मुझे तो लगता है कि पैच से लगी थी गेंद पहले, उनका बल्ला पीछे था। हाँ बहरहाल वो भी मुतमईन नजर हाँ, नहीं आए, बिल्कुल मुतमईन नजर नहीं आ रहे थे बैट। लेकिन ज़ाहिर है कि यहाँ से इतना ज़्यादा सही नहीं हो सकता। लेकिन जो आपने देखा बहरहाल एक्शन रिप्ले आप अभी तक जो है बेस्ट पीछे पलट पलट के देखें, शायद उन्हें वापस बुला बहुत दिया नाराज जाए। हैं। हाँ जी, ये देखिए सामने में बैट्समैन थे हूपर जिन पे एलबीडब्ल्यू की अपील हुई। हूपर Tunis to continue. He'll bowl to Hooper, who took a single off the last ball of the over. Hooper is 8. And the West Indies are 96 for 3. Well, he's given him leg before. Hooper wrapped in the pad, coming forward, and Hooper goes leg before to 8. Waqar strikes the blow, and the West Indies have lost their fourth wicket, with Carl Hooper being leg before wicket to Waqar Younis, and 96 for 4 now, and the West Indies beginning to look shaky and depending more and more on their captain Desmond Haynes, who remains 46 not out. So Waqar's second wicket, and Hooper out for 8. it's interesting to say, Larry say, I think that ball sitting outside off stump, coming into the batsman and Hooper going forward, saying, there it is, Waqar coming and banging the ball. Well, it's in front of the stump, and as I said earlier on, that most of his victims are either he bowls them or gets leg before decisions. That one pitching slightly outside the off stump, but I'm not too sure to say that whether it was going to miss the stumps, because he was covering the wickets, covering the stumps fully, and the ball just about, I think, hitting him on the middle, if I'm right. Well, he was pushing out to it. He was beaten for pace. He played very late indeed, and Carl Hooper goes leg before. So the West Indies are 96 for 4, been going along at a good clip. $145 for Haynes' 32nd 50 in Test matches, and he's hit 4 fours. And he's set his mind on scoring a century here in Pakistan. He thought he had one on the last show here at this ground, but he was left high and dry by the other batsman. That's 88 not out. Yes. And he's really punishing the loose ball now. And that's a fine stroke for a boundary. So Haynes in very good touch as he needs to be from the West Indies point of view. Another boundary to him, and he moves on very smartly up to 56 correction. And the West Indies to 110 for 4. Waqar Younis, D fine leg पे, वसीम अकरम एक्स्ट्रा पावर पे खेला, अब्दुल कादिर नसीर की, Welcome to all.
fifth snowball from Wasim Akram. 145. Shot. That's a lovely shot. That's going to be 4 runs. Abdul Qadir won't get to it. Beautifully timed. Perfectly executed. We'll have another look at that. He made it look so easy and effortless. He did. In fact, I'm sure we'll see the replay soon. Although he didn't move his feet, but he was well on top of the ball and played it away from his body. Sorry, we aren't able to show you the replay. Once again, there's a minimum of footwork and backlift, and he gets a single down towards deep mid-off. It will be far more useful to his team than when he's trying to bowl quick. He's now going over the wicket to the right-handed Logie. And if that's out, beautiful catch by Salim Yusuf. Diving towards his right, the West Indies have lost their 5th wicket. Logie caught Salim Yusuf, bowled Wasim Akram 25, it's 151 for 5. And a vital wicket too, because Logie was threatening. He played his strokes comfortably, and along with his captain added 50 odd runs. And Wasim Akram produced the delivery that he threatened all the time, because he did beat both the batsmen, and this one coming over the wicket to the right hand, angling away from him, which hopefully we'll see in the replay. Angling away from him, and Logie, I think it's probably a little bit surprised by the bounce, because the previous delivery wasn't that. There it is, what we were talking about, the ball coming over the wicket, angling, and a very good catch by Salim Yusuf, because I don't think that would have carried the first slip. The wicket, 2,994 runs in Test cricket, another 6, and he would have joined he would have become the 80th player to score 3,000 runs in Test cricket. And a very respectable average too. Many batsmen would be proud to own that batting average. मेरे इंटरनेशनल खिलाड़ियों के अजीब अजीब से खिताबात होते हैं, उनके साथी जो दे देते हैं उन्हें। वक़ार यूनुस, जॉन है बैट्समैन, देखते हैं कि रोकने में कामयाब नहीं हो सकते। 4 सिकंदर एक शॉट पे। एक बड़ी दिलचस्प बात ये थी कि इस बॉल से पहले जावेद मियादाद को उन्होंने स्क्वायर लेग और फाइन लेग के दरमियान थोड़ा सा खड़ा किया था। अगर हम बाद में देखेंगे तो वक़ार यूनुस का और इमरान का मकसद ही यही था कि जुजॉन को जिस्म की तरफ गेंद खिलाएं और ताकि वो उसको स्क्वायर लेग की तरफ खेलें तो अपिश जाए। तो जुजॉन तो कामयाब हो गए इसे चौका मारने में, मगर वक़ार कामयाब नहीं हो सके उन्हें आउट करने में। अगर हम स्क्रीन पे देख सकें जावेद मियादाद को, अंपायर स्क्वायर लेग अंपायर के पास बिल्कुल पास खड़े हुए हैं। इस बॉल से पहले ही उन्हें लाया गया था। ये जावेद मियादाद, ये देखिए, ताकि ये अपने बहुत अच्छी गेंद वक़ार यूनुस। 11 ओवर कोई मेरे ने 42 रन और 2 विकेट। तो 2 विकेट वक़ार यूनुस ने और 2 मुश्ताक और 1 वसीम अकरम। जॉन स्क्रीन पे और फ्रेंड्स उनके कप्तान यकीनी तौर पर थोड़े से दबाव में है वेस्ट इंडीज की टीम, क्योंकि 5 उनके खिलाड़ी जो हैं वो रिकॉग्नाइज बैट्समैन 5 आउट हो चुके हैं। वक़ार यूनुस 11 ओवर 42 रन 2 विकेट, मजमूई स्कोर 170, 5 खिलाड़ी आउट हुए हैं, बढ़ रहे। 17 डुजॉन, 82 डेस्मंड हेन्स, 178 वेस्ट इंडीज।
वेस्ट इंडीज के लिए आखिरी उम्मीद है डूजॉन का वहाँ रहना बहुत ज़रूरी है डेजमंड हेन के साथ। हाँ, क्योंकि फिर तो जैसे आपने बताया कि बॉल खेल शुरू हो जाती है। और वहीं पर आउट, जहाँ मैंने आपसे जो कहा था सिकंदर बाक्स बता रहे थे कि ये है हिकमत अमली, तो उसी पॉइंट पे जावेद के हाथों जो है वो डूजॉन वकार यूनुस के गेंद पर कैच आउट हुए। आइए सिकंदर। नहीं साहब, मैं काफ़ी देर से आपको यही बता रहा था कि जावेद को खास तौर पे डूजॉन के लिए वहाँ प्लेस किया गया है कि और वकार यूनुस उनको खिला भी उसी जगह रहे थे कि वो फ्लिक करें और अपनी गेंद उलझ जाए। बहुत अच्छी हिकमत अमली जिसे कहते हैं वकार की और कप्तान इमरान खान की, और उसमें कामयाब हो गए और बहुत ही इंपॉर्टेंट विकेट वेस्ट इंडीज़ की उन्होंने हासिल की, इसलिए कि अब जो है खेल शुरू हो जाएगी। 4 उनके फास्ट बॉलर रह गए और ये बहुत ही अच्छी कामयाबी है पाकिस्तान की कैच के वक्त से पहले। तो नाज़रीन, यहाँ डूजॉन के आउट होने के साथ ही चाय का वक्फा भी है। वैसे भी ये आखिरी ओवर था, लेकिन ज़रा सा हम आपको पहले रिप्ले दिखाएंगे इसका। ये साइड से आपने देखा और उम्मीदाद, ये इनकी हिकमत अमली थी, सीधा उनके हाथ में कैच गया और ये सामने। इसका मतलब है कि इमरान को जावेद for the West Indies 89th inning. Also being the vice captain of the West Indian side. I think he was the vice captain on the last tour to Pakistan. He was Vivian Richards' deputy. The field is allowed. Tried the stump to the bowler's end, missed. Mushtaq also couldn't gather that throw. 2 more to Marshall. He's now 7. It's 188 for 6. That's a nice looking stroke. Going through to the cover boundary. Over the rope, 4 runs. This is very heavy ball. Yes, I think the heaviest I've seen is Vivian Richards and Clive Lloyd. In fact, Lloyd used to have something like 6 or 7 grips on his bat. Coming down towards deep third man. Over the rope. 4 more runs to Desmond Haynes. He's now 88 not out. Equals his previous highest against Pakistan, which was also 88 not out, and also on this ground. But Javed Miara now fielding with a short mid-wicket. Bowled in. He almost dragged on the previous delivery, and this time he's bowled. The middle stump rudely pushed back. And the West Indians have lost their 7th wicket. Malcolm Marshall bowled Waqar Yunus to 13. They are now 200 for 7. Yes, Marshall seems to be unhappy with that because he was faring Waqar fairly comfortably. But I think this one probably hit his pad first before hitting the stump. And I'm sure Pakistan will be pleased with that wicket because both Marshall and Haynes were taking the game away from the Pakistanis. They had added 22 runs and Marshall was playing quite confidently. So that was Waqar Yunus' 4th wicket. 16 overs, no maidens. He's taken 4 for 61. 4 for 61 for Waqar Yunus. And not a bad performance on a wicket which everybody predicted, rated, and whatnot as a spinner's wicket. And that's what I was saying earlier on, that
the cricketers who, well, let's say the weightlessers, big gap between the bat and pad. But I think seeing from the front, will probably say that it did hit his pad, and yes, it did. It hit his pad and then went on to the LBW. इससे साफ जाहिर होता है कि खास बॉलर्स को भी इस विकेट पर खेलना इतना ही मुश्किल है जितना कि स्पिनर को. इसके लिहाज से तो पाकिस्तानी बैट्समैन को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा. 250 से ज़्यादा रन वेस्ट इंडीज़ के अगर हो गए तो पाकिस्तानी बैट्समैन को भी काफ़ी टफ टाइम मिलेगा. एंड्रूज बाएं हाथ से बैटिंग करते हैं. आगे भी गेंद को पॉइंट की तरफ खेल दिया. वसीम अकरम ने फील की काउंटी की तरफ से. खासतौर पर वनडे गेम्स में उन्होंने काफ़ी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया. वकार यूनुस 5 विकेट लिए एक इनिंग में 3 मरतबा. अच्छा बॉल वकार यूनुस का. यॉर्कर विकेट में आता हुआ. ये वही वकार स्पेशल है हारून जो हिटिंग करती है आकर. वकार 5वां विकेट हासिल करने में कामयाब. बड़ी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया है और वही बात कि पुराने बॉल के साथ जितना अच्छा स्विंग और जितना अच्छा कंट्रोल वकार ने दिखाया है उससे यंगस्टर्स को काफ़ी सबक सीखना चाहिए जो भी इस तरह बॉलिंग करते हुए देख रहे हैं वकार यूनुस को. एम्ब्रोज आउट 2 रन बना के. ये इस सीज़न में इनकी चौथी दफ़ा 5 विकेटें हैं एक इनिंग में. हमें बैन से पूछना पड़ेगा कि इस किस्म का कोई रिकॉर्ड है कि एक सीरीज में या एक सीजन में सबसे ज़्यादा 5 आउट करने का. ये एक्शन रिप्ले. वकार का आउट स्विंग और एम्ब्रोज के लिए इन स्विंगर बिल्कुल विकेटों के सामने उनके पैर पे लगा. बैट्समैन नहीं है इसलिए उन पर बहुत ज़्यादा अटैक करने की कोशिश. एक स्लिप एक गली 20 पॉइंट शॉर्ट मिड ऑन और शॉर्ट स्क्वायर लेग. मुझे लगता है वकार की कोशिश होगी कि गेंद अंदर लेके आए. यॉक करने की कोशिश होनी चाहिए. उन्होंने बाउंस करने की कोशिश की लेकिन गेंद ज़्यादा ऊंची नहीं आई. ऐसे बिल्कुल आप इतनी ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाइक से गेंद उन्होंने शूट किया जो कि शॉर्ट से खड़े हुए फील्डर एजाज के लगी. काफ़ी जोरदार हिट थी और एजाज काफ़ी तकलीफ में. ये देखिए शूट किया और एजाज ने अपने आप को बचाने की कोशिश की, नाकाम रहे. काफ़ी जोर से गेंद लगा है उन्हें. जिस किस्म का हिंद से शॉट खेला है इससे साफ जाहिर होता है कि हिंद की हिकमत अमली यही है कि किसी तरह इसी ओवर में अपने 100 रन मुकम्मल कर लें देता है. इसी स्टेडियम पे 3 बैट्समैन 99 रन से आउट हुए हैं एक टेस्ट मैच. वसीम अकरम हिंद को और वो अपना 1 रन बनाने में कामयाब. और इस तरह हिंद ने अपनी पहली सेंचुरी पाकिस्तान के खिलाफ बनाई. एक बहुत ही अच्छी इनिंग हिंद की. बहैसियत एक कप्तान वो इस इनिंग को काफ़ी अच्छे तक याद रखेंगे. हिंद के 100 रन 306 मिनट्स में बने. 206 बॉल उन्होंने खेली और 7 चौके लगाए. 215 रन. 8 खिलाड़ी आउट. वेस्ट इंडीज हिंद बैटिंग कर रहे हैं 100 रन पे. बहुत अच्छी इनिंग है इनकी. ये देखिए काफ़ी खतरनाक रन था ये. जी हाँ, मगर बेचैनी इतनी थी इन्हें तो उन्होंने चांस ले लिया. और कादिर का ये थ्रो अगर विकेट पर लग जाता तो and even on the first day here that's not been the case. And from the fast bowler's point of view, one can only dread to think what will be happening on the last couple of days. Well, just sheer frustration for Wazim Akram in that over, and at the end of it somehow Bishop still survives. He's got 12, Haynes 113, 237 for 8, and
a ball which was a little bit high going down the leg side. Umpire said not out. So we've come to the end of an enthralling first day of the field. That's the onside field. And the slips being now strengthened. 2 slips. James Beaton has tried the off stump. James now has 5,828 runs in Test cricket. He's facing Wasim Akram. He's got 3 deliveries to move away outside the off stump. Let's see whether he brings the next one in. Oh, they're appealing for LBW and he's out. Yes. Well, I think Desmond looked at that particular delivery, as he said, whether or not he's going to bring that one in. In fact, he did. And it'll be interesting to see in the replay that that ball must have pitched within the stumps. And possibly outside off slip also, but coming into the batsman, which he carried up. And very magnificent innings. I mean, one of the best runs we have seen on this ground, because if you look at the score, the total is 243, and the West Indian captain has scored almost half of those. There it is. Straightest delivery. Yes, that one was a straightest delivery, and I think Desmond probably thought that this was also going away from him to an angle which he was beaten twice in that over. He probably thought that going to be the same one, but this time it was a straightest delivery, and Desmond not offering any stroke was it just LBW. So 243 for 9, and of him there's 15 Test 100 runs, so this must rate very, very high. To the real captain's not. Absolutely. And 302 runs in Test cricket. And it's Bishop now to face up to Waqar Yunus, going right arm around the wicket, and there's going to be a conference between the two batsmen. Also got a first class 100. Yes. 30 not out as his highest, so he's probably enjoying himself there. वसीम अकरम वॉच और अगले कदम पे आते हुए एक अच्छा कवर ड्राइव और 3 रन का इजाफा. बहुत ही कीमती रन वेस्ट इंडीज के नुक्ता नजर से. ऑफ स्टंप से बाहर जाते हुए गेंद को ड्राइव करने की कोशिश की, बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए सलीम यूसुफ के पास, और इस तरह ये आखिरी विकेट वेस्ट इंडीज की 261 रन के स्कोर पर गिरी. बिशप एक बहुत ही अच्छी इनिंग्स खेलकर आउट हुए. उन्होंने 22 रन किए. बिशप ने जितना अच्छी बैटिंग की उतने ही खराब शॉट मार के वो आउट हुए. गेंद काफी बाहर था और उन्होंने इसको बाहर जाती हुई गेंद को खुद ही छू दिया. इतना अच्छा गेम नहीं था, मगर उन्होंने खुद भी नाराज लगते हैं अपने आप से इस बात पर, इसलिए कि बहुत अच्छी बैटिंग की उन्होंने. 22 रन बहुत ही ज़्यादा कीमती 22 रन हैं ये, और अगर पाकिस्तान लीड नहीं ले सका तो यही रन जो है पाकिस्तान को काफ़ी मुश्किलात में डाल सकते हैं. और क्या करती है जी हाँ, ये इस वक्त वेस्ट इंडीज का स्कोर कार्ड आप देख रहे हैं. ग्रेनिज LBW वकार 3,
Haynes, LBW, Wasim, Akram, 117, Richardson, Stump, Salim Yusuf, Bol Mustaq, 26 बेस्ट रमीज राजा ने कैच किया, मुश्ताक ने उन्हें आउट किया 1 रन, हूपर को LBW किया, वकार यूनुस ने 8, लोगी को सलीम यूसुफ ने कैच किया, वसीम अकरम की गेंद पर 25, दूजों मियादाद ने कैच किया, वकार बॉलर थे 17, मार्च. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to the National Stadium, Karachi, where I should inform you that Shoaib has completed his 50. He's not out 54 at the moment. Salim Malik is not out 89. Pakistan have gone from 171 for 3 overnight to 178 for 3, and we are watching the 4th over of the morning. And that was the stroke with which Shoaib reached his 50, a nudge towards third man, and he took 3 runs to complete his 50. Pulls that one away towards long leg. Marshall, the fielder. The batsmen take one more. It's 179. Shoaib is now not out 55. Shoaib's 50 took him 272 minutes, 164 deliveries he faced, and he hit just 2 fours. This was his 9th 50 in Test cricket. And for those of you who may be interested, this was the second slowest 50 for Pakistan in Test cricket. The slowest is 318 minutes. That was Ramiz Raja, and also against the West Indies at Karachi in 1986-87. And the third slowest now is Mudassir Nazar's 271 against England at Lahore in 77-78. Ambrose to Salim Malik. A lovely shot, but straight to a fielder. He just gets a single. Walsh, the fielder, at mid-off. He couldn't quite place that. Courtney Walsh. The end of Ambrose's 15th over. 15 overs, 2 maidens, and he's taken 1 for 26. And for those of you who might be joining us now or had taken some time off after watching the hockey at Melbourne, Pakistan from 171 for 3 overnight are now 180 for the loss of 3 wickets. 4 overs have been bowled this morning. Shoaib has reached his 50. He is not out 55. And the partnership is now worth 153. 153. It's Hooper to bowl to Salim Malik. That's best fielding at short third man. No stroke offered. Deliberate padding, so they won't get any runs. Malik not out 90 moment. Silly mid-off. Gordon Greenwich. And silly mid-on the other side is Gus Logie. 2 men close to the bat on either side of the wicket. Slight change in the field, or is it going to be consultations between Haynes and Hooper? Slip has been brought in. Best is now in the slips, so there are 2 men in the inner cordon on the offside and then 3 in the outer cordon. That's gone past the diving best at slip towards the third man boundary. Malcolm Marshall, the fielder. The batsmen take 3.
The score now goes to 183, which means that the fourth wicket has now put on 157 runs, which is the highest fourth wicket partnership for the fourth wicket by Pakistan against the West Indies. Hooper now to Shoaib. That's a nice shot. Wrists turned the last moment to guide that ball wide of the square leg umpire. The batsmen get 2. Shoaib is now 57 and Pakistan have gone on to 185 for 3. It's the end of Hooper's over. His bowling figures 16 overs, 3 maidens. He's taken no wickets for 42. And an interesting point about the fourth wicket partnerships against the West Indies is that there have been 400 plus partnerships and all have involved a member of the Mohammad family. The highest is this one, which has yielded 158 between Shoaib and Salim Malik. 154 for the fourth wicket by Wazir Mohammed and Hanif Mohammed at Port of Spain in 57-58. 121 by Hanif and Wazir again at Bridgetown in 57-58. And 108 between Majid and Mushtaq at Port of Spain in 76-77. That shows the enormous contribution the Mohammed family has given to the Pakistan cricket. The only difference is, I think, the generation gap. The one which is leading the list is the youngest of the lot, son of the great Hanif Mohammed. And what a fine knock he has played. He's there since yesterday. He fought it out. There were times when he was really struggling to middle the ball, but he made sure that he hung around there. There was tremendous concentration on his part, and I'm really pleased to see that this little young opener has made sure that he is serving Pakistan the way it's needed at this moment. .186 for 3. Shoaib 57, Salim Malik 94.